Can you see my screen? Yes, sir. So last time we have seen up to practical 2A first program, that is recursive function. Using recursive function we have defined the factorial of a number. Now we will see the recursive program of Fibonacci numbers. The Fibonacci numbers, क्या होता है Fibonacci numbers? Anyone has idea? Addition of last two numbers. Addition of last two numbers, that is the it starts with number 1 and 1, and after that it is addition of last two numbers. Okay, so if I have numbers 1 comma 1, that is the initial number, the next number is 1 plus 1, that is 2, the next number will be 1 plus 2, that is 3, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 is 13, 13 plus 5 will be, sorry, 13 plus 8 is 21. Now you will feel why this series is very important. So let me give you the geometrical approach to looking at this particular problem, and it has very good geometric applications. You can actually draw this geometrically sequence. That is, first I am creating a block of 1 cross 1. I am attaching, ये हुआ first number, I am attaching the block of this like this. Then I want the area to be equal to 2, so I will write, ये size कितना होगा अभी, 1 plus 1 2. So I will make the square of 1 plus 1, that is 2. So ये इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 हो गया, सॉरी इसका जो लेंथ है वो 2 हो गया, 2 क्रॉस 2. तो अभी कितना ये हो गया, 1 plus 2 3. So I will make a square like this. So 1 down, 1 side. ये 3 cross 3 का है हो गया. फिर अगेन आई विल डाउन 1 साइड, दैट इज 3 plus 2 5. ये 5 cross 5 का हो गया. अभी टोटल कितना हुआ ऊपर, 5 plus 2 plus 1 8. So I will down. So every time I am drawing the one square down, one square side, and I am constructing this sequence. Can you see this sequence in geometrically? I have drawn the square of length 1 first, then I have drawn down, then साइड में ड्रॉन किया, दैट इज राइट हैंड साइड पे, फिर से डाउन साइड में ड्रॉन किया, फिर से राइट हैंड साइड पे किया, डाउन, राइट हैंड साइड, डाउन, and you can construct the so many rectangles or so many squares of this particular sequence. Can you see this sequence geometrically, Fibonacci sequence? अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये 5 है, ये भी 5 के बाद ये 8 वाला है, तो नेक्स्ट विल बी 8 plus 3 12, सॉरी 11 12 13. सो ये 13 क्रॉस 13 का स्क्वायर हो गया. सो ये 13 13 13 13, ऑल साइड इक्वल टू 13. देन मैं नेक्स्ट ड्रॉ करूंगा, वो 21 by 21 का स्क्वायर होगा, जो मेरे अभी नहीं है मेरे पास. ठीक है. So this is the sequence we have to generate using the Fibonacci number. So let us see the code. I have opened the sine note, cancel. Then I will paste the program over here, and then I will explain the logic. Okay.
ठीक है, सी इफ देयर इज एनी मिस्टेक, नो देयर इज नो मिस्टेक, क्योंकि मैंने ये नोटपैड पे टाइप किया, फिर नोटपैड से वर्ड में लाया, फिर वर्ड से ये लाया. Okay, so sequence starts with function, defining a function. This k is the output variable. Inside this Fibo is the name of a function. So always remember the syntax. This is your output variable, or which is written by the function. This n is your input variable, and this Fibonacci is nothing but name of a function. This is the name of a function. So in YY I will ask like this. I will write this line, function k is equal to Fibonacci n. उसमें से function name कौन सा है? You have to identify. Okay. Next is I have initialized k is equal to -1. So अगर ये definition बिल्कुल भी रन नहीं हुआ, if भी रन नहीं हुआ, else भी रन नहीं हुआ, मुझे k is equal to -1 आउटपुट मिलेगा. So I will say compute the value 0 if n is less than 0 or n is greater than 200, I will print invalid input. Otherwise, I will check the condition. First, I will check whether n is equal to 0 or 1. If n is equal to 0 or 1, I will put the value of k is equal to 1, because we have the sequence a0 is equal to 1, a1 is equal to 1, a2 is equal to 2, a3 is equal to 3, a4 is equal to 5. Addition as say first number. So first two numbers I have initialized, क्योंकि हम लोग को दो वैल्यूज लगता है. Otherwise what will happen, k is equal to Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci number of n minus 2 and n. Then I will print the 8 वाला a is equal to 8. मतलब I want a6 is equal to 13, a7 is equal to 21, and what is a8? When n is equal to 8, 21 plus 13 is 34. I want to print this value after the execution of the function. Again, how this function will execute? जब मैं 8 input करूँगा, I will put 8 into this particular. So it will straight comes down because it does not satisfy this, so it will go to the else loop. else में वो condition check करेगा, ये condition भी satisfy नहीं हो रहा है, इसीलिए वो else में जाएगा. else में जाके क्या दिखेगा उसको, k को, I want to find out what is fact of 7 plus fact नहीं, I want to print the value of Fibonacci of 7 plus Fibonacci of 6. Again Fibonacci of 7 के लिए again वो loop में enter करेगा and so on. Fibonacci of 6 plus Fibonacci of 5 and Fibonacci of 6 क्या है, Fibonacci of 5 plus Fibonacci of 10. So इसको भी वो क्या calculate करेगा, here it will calculate Fibonacci 6 plus Fibonacci 5 and here it will calculate Fibonacci 5 plus Fibonacci of 4. जब तक ये 0 and 1 तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हर एक के लिए वो आइट्रेशन के लिए इट विल स्प्लिट इनटू 2. यहाँ पे क्या होगा, Fibonacci 5 plus Fibonacci 4, Fibonacci 4 plus Fibonacci 3, यहाँ पे क्या होगा. सो ऐसे रिपीटिवली वो करते रहेगा जब तक उसको n is equal to 0, n is equal to 1 नहीं मिलता है. जब तक n is equal to 0 मिलेगा तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा फिबोनाकी के इमीडिएट सीक्वेंस पे, फिर वो रिवर्स वे में we get the value of Fibonacci 7 plus Fibonacci 6. This is how the logic of program works in the recursion. So let me save this. You know the process of saving. I have saved last time in the Scilab folder, Scilab programs folder. Since it is practical 2, program 2, P2A2 नाम से सेव करूंगा मैं इसको. Then I will execute. I will check whether it is executed correctly or not.
C, the value of 8 Fibonacci number. Since I have put n is equal to 8, I will get the value of 8 Fibonacci number is 34. So I will just copy it down over here, output में. किसका माइक चालू है? Okay. Okay, so this completes the recursion. Let's move on to the practical 2B. Practical 2B says that write a program in Scilab to determine the cardinality of following set. A is equal to 1, 23, minus 5, 6, 78, 3, and B is a set of natural number. So first we have denoted A is equal to 1, 23, minus 5, 6, 78 and 3. कितने elements है इस set में? How many elements present in this set? 6. So it should display me the cardinality of A is equal to 6. बट मैं जब ये प्रोग्राम साइनोट में पेश करता हूँ, अभी मैं आपको एक दो अलग अलग तरीके दिखा रहा हूँ इसको. कंट्रोल C, आई विल जस्ट यहाँ पे आई विल जस्ट प्रेस CLC, कंट्रोल B. सो ऑलरेडी इसने प्रिंट किया लेंथ इज इक्वल टू 6. बी का कार्डिनलिटी प्रिंट किया, कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट इज इंफिनिटी. सो मैंने ये वर्ड से डायरेक्टली पेश किया तो मुझे आंसर मिल रहा है. बट अभी मैं इसको साइनोट में प्रेस करता हूँ. साइनोट में देखो क्या होता है इसका. लेट मी पेस्ट इट इनटू द साइनोट. यही सेम प्रोग्राम, फाइल नहीं, साइनोट का गया. This I will get new, control V. The same program I have copy pasted. I will write CLC over here. Okay, save and execute. B. Now execute the program. See what is the output. It has not displayed the cardinality of A. Yes or no? क्या प्रॉब्लम दे रहा था? मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ directly in the console. It was giving me the cardinality of set E. बाकी मैं लेंथ पे पेश कर रहा हूँ तो मुझे आंसर दे रहा है 6. बट ओरिजिनल इसमें मुझे आंसर नहीं मिल रहा है. Why it is so? What is the difference? See here, this output I got from the Synode program. Okay, जिसमें cardinality of set A missing है. I don't get the value of cardinality of A. But in this, when I directly paste in the program, I will get the cardinality of A, length A is equal to 6. Directly मुझे मिल रहा है. Why it is so? Let me give you the correct code of this particular thing. अगर आप जर्नल में ये प्रोग्राम लिख चुके हो तो उसको जर्नल में करेक्ट करना. ठीक है. Where is my Synode? What I will do, I will put display में I will put length of A. Length of A comma cardinality of A is. If I put like this, what I have changed the function?
Since I don't get the value by length a itself, I will just change the function disp. First the variable name. Variable में क्या value print करना है? मुझे length of a को print करना है. Cardinality of set a is. And then I will press 7 execute. Now when I go to the console, it is giving me the cardinality of set a is 6. Cardinality of set b is infinity. So what change we have placed? Change क्या किया हमने? We have changed this particular statement. So let me control C, word में जाके ये statement को change करते हैं. ठीक है? Let me put the text only. And then I will write the output. What is the output over here? Cardinality of set A is this, cardinality of set B is this. Okay. What about next? Polynomial evaluation. This is very, very important. Write a program in Scilab to find the value of polynomial px is equal to 2x cube minus 7x square plus 4x minus 15 at x is equal to 4 and finding the roots of above polynomial. Okay. तो आपको दोनों चीज करना है. एक तो पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करना है, मतलब मैं x इज इक्वल टू 4 इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलना चाहिए? व्हाट वैल्यू शुड बी प्रिंटेड? 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 15. इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू आता है दैट वैल्यू आई शुड गेट प्रिंटेड बाय दिस पर्टिकुलर फर्स्ट थिंग. What about the second thing? Second thing में मुझे factorization चाहिए, मतलब एक factor, then next factor, then third factor. If it has 3 factors, I should get 3 values. Okay. So first you have to take the value of the polynomial and roots. Roots मतलब क्या? ये factors का जो भी value रहेगा. For example, if I have the factorization x minus a into x minus b into x minus c, then the values of a, b, c. ये 3 हमको चाहिए. ठीक है. So let us execute this program. Okay. Let me give you the execution line by line. In Scilab, the line by line execution is also possible. So let me go to the Scilab. कहाँ गया sign note? Let me consider a new program. First statement is CLC. I will define x is equal to POLY 0, x. Okay. So let me tell you what this function does. X is equal to polynomial 0, x. Control C. Let me go to the console. Individually अब देखो. What it is doing? Nothing. When I print x, I will get x is equal to x. The definition of this polynomial function. अभी मैं आपको एक और definition बताता हूँ. P is equal to polynomial. I will write 0, 1 in the first bracket, comma x. What does it printed? Minus x plus x square. So when I specify this vector, the formula for this polynomial function is when I write 0, 1 and I will write the x in the string, it will create a polynomial x minus 0 into x minus 1. Understood this concept?
it is creating the polynomial x minus 0 into x minus 1, that is x square minus x, क्योंकि x minus 0 is x, x into x minus 1 क्या होगा, x square minus x. So पहले minus x, that is the lowest degree to highest degree, minus x plus x square. So understood ये polynomial function क्या करता है. So when I write polynomial 0 comma x, it will create a polynomial x minus 0. What is polynomial x minus 0? It is x. If I write polynomial 0 comma 1 minus 1, what does it printed? It will create a polynomial with roots 0, 1 and minus 1. It will create a polynomial with roots 0, 1, minus 1. So मतलब क्या करेगा ये? If I use this, it will create a polynomial x minus 0 into x minus 1 into x minus minus 1 will be x plus 1. और इसको सिंप्लीफाई करके जो भी पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल वो डाल देगा. बट अपने पास क्या है कि अपने को पता नहीं रूट्स क्या है, तो हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 0 कॉमा x एंड देन वी विल अप्लाई द पॉलिनोमियल डेफिनेशन. क्योंकि इससे अपने को क्या मिलता है, x is equal to value polynomial term x. We get x is equal to polynomial term x by this particular function. So this program is very important, इसलिए मैं इसको line by line explain कर रहा हूँ आपको. So that is your first thing, polynomial 0 comma x, polynomial function use किया. Then I will define the actual polynomial. Actual polynomial क्या था अपना, 2x cube. 2x cube इसमें लिखने के लिए मुझे क्या करना है, इट इज 2 टाइम्स, कोई भी ऑपरेटर मिस नहीं करो. अगर आप 2x क्यूब लिखते हो तो इट इज टेकिंग द मिस्टेक. यू शुड राइट मल्टीप्लीकेशन, डोंट फॉरगेट दिस मल्टीप्लीकेशन. 2x क्यूब minus 7x square, so minus 7 into x square, no operator is assumed to be present. Minus 7x square plus 4x, so plus 4 into x. सिर्फ जस्ट 4x लिखता हूं तो मैं देखो रेड में टर्न हो रहा है, वो जो भी एक्सप्रेशन है वो रेड में टर्न हो रहा है, इसीलिए यू हैव टू राइट 4 इंटू एक्स एंड देन लास्ट टर्म क्या है, माइनस 15. ठीक है, लेट मी राइट DISP P comma given polynomial is, given polynomial is. So इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा. So let us see. If I execute this program, that is your practical 2C डॉक्यूमेंट, एक बार तो सेव करना ही पड़ता है पूरा साइलैब प्रोग्राम्स में जाके. P2C, ठीक है, 7 एग्जीक्यूट. लेट मी गो टू द कंसोल. व्हाट इट प्रिंटेड देखो, minus 15 plus 4x minus 7x square plus 2x cube. Is it your original polynomial? Yes or no? Okay. Next step is evaluating polynomial. This Horner method, HORNER, is used to evaluate a polynomial at a particular value. So when I write Horner P comma 4, it is giving me the value of P at x is equal to 4. Okay, so let me write this in the Scilab console itself. So Scilab console में ये लिख देते हैं Horner P comma 4 और I will just सेमीकोलन हटा देता हूँ तो वैल्यू मेरा प्रिंट करके आएगा आंसर इज इक्वल टू 17. मतलब ये पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 इज 17. दैट इज द इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल वैल्यू. इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल वैल्यू इज Horner P comma 4. व्हाट इज नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये वैल्यू हमको डिस्प्ले करना है. सो मैं ये इसमें वही चेंज कर देता हूँ. वेयर इज माई साइन नोट्स, आई विल प्रिंट दिस k is equal to this value and I will again use display function. I will display the value of k, the polynomial value at x is equal to 4. The polynomial value at x is equal to 4 is, I have displayed it. Then next क्या करना है आपको, फैक्टर्स निकालने हैं.
So let me write G is equal to factors. Factors is a function which will give me the factors. Let me evaluate this function for you. Control C. Scilab console में अगर आप directly paste करोगे ना, this is your console window. If you place it directly over here, it will execute. If you don't put the semicolon, it will execute. So there are two factors. First factor is minus 3.5345001 plus x, and second factor is 2.1219408 plus 0.34501 plus x square. मतलब उसने फैक्टराइज कर दिया. आपको ये फैक्टराइजेशन मैन्युअली निकालना पड़ता तो कितनी तकलीफ होती, बट पीसी हैज डन इट वेरी फास्ट. नाउ वी हैव लास्ट पार्ट इज फाइंडिंग रूट्स. सो फाइंडिंग रूट्स में पहले फैक्टर्स प्रिंट करने हैं, तो लेट अस प्रिंट द फैक्टर्स. सो व्हाट इज द कोड टू डिस्प्ले द फैक्टर्स? DISP G, factors given polynomial R. Factors of given polynomial R. Then I will write, say, R is equal to roots T. Actually solving. Actual solve करो. DISP R, roots of given polynomial. Roots of given polynomial. So let us save and execute this program. कंसोल में जाओ. गिवन पॉलिनोमियल पहले प्रिंट किया, वैल्यू प्रिंट किया, द पॉलिनोमियल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4. देन फैक्टर्स प्रिंट किया. फर्स्ट फैक्टर इज माइनस 3.54 प्लस दिस, एंड देन इट हैज प्रिंटेड द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. सो दिस ऑल, ये देखो यहाँ पे देखो ये I है, मतलब दिस टू आर द कॉम्प्लेक्स रूट वेयर दिस इज द रियल रूट. सो Scilab also allows you to give the value of complex root. So let me print this as a output. आउटपुट बड़ा आएगा इसका. जस्ट ये जो 2 and 3 है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे आगे ले लो. इट इज फ्रॉम दिस 7x स्क्वायर एंड देन उसके बाद 2x क्यूब है, ऐसे कुछ तो आएगा. सो थोड़ा मिस्टेक होता है जब हम पेस्ट करते हैं, क्योंकि वो Scilab कंसोल में ठीक से दिख रहा है. देखो Scilab कंसोल में ठीक से दिख रहा है वो, बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होता है. ये देखो x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर देन 2x क्यूब है, तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. but you should understood what it has printed, and then accordingly you will have to write the output. Okay, so this is about C. Then we can also go to the practical 2D. Okay, practical 2D says that greatest common divisor. Write a Scilab code GCD of 234 and 3882. अभी मैं आपको इसका एक वैल्यू यहाँ पे Scilab कंसोल में दिखा रहा हूँ. लेट मी गो टू द Scilab कंसोल. CLC कर देते हैं. कंसिडर इफ आई अज्यूम a इज इक्वल टू 12. ओके, a इज इक्वल टू 12 मैंने डिफाइन किया. सो यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस? a इज इक्वल टू 12. व्हाट इज द टाइप इट हैज असाइन? क्या है टाइप a का? What is the type of A? Type of A is written as double. Are you there? Can you see here? Variable browser में आपने जब A is equal to 12 define किया, it has printed as double. तो GCD का concept सिर्फ integer पे लागू होता है. So if I write A is equal to 1, 2, it will print me a is equal to 1, 2. चेंज किया पर फिर भी टाइप क्या हुआ? डबल ही हुआ. So what I can make here,
I will change this into 32-bit integer by writing int 32 1,2. सॉरी, int 32 का सिंटैक्स क्या है? हाँ, ब्रैकेट में लिखना है. So let me print this int 32 inside the bracket 1,2. Now, what is the difference between here and here? What is the difference between here and here? क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको ये आउटपुट में और ये आउटपुट में? What is the difference between this output and this output? क्या डिफरेंस है? Can you see the decimal point in the first output? इसमें डेसिमल पॉइंट एंड यहाँ पे डेसिमल पॉइंट चला गया है. डेसिमल पॉइंट चला गया है. यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है 1/2 एंड टाइप इंटीजर प्रिंट करके आया. अभी देखो a का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर करके प्रिंट करके आया, वेयरएज फर्स्ट में a का वैल्यू किस में था? डबल में था. सो दिस फंक्शन int32 ये जो कमांड है ये कमांड क्या करता है? दिस कमांड converts the expression into integer quantity. This command converts the expression into integer quantity because greatest common divisor GCD क्या होता है? Greatest common divisor. As name suggests, we have to first find all the common divisors of 234 and 3882 and उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे उसमें से सबसे बड़ा नंबर चूज करना है. Okay. So first I will write v is equal to int 234, 3882. Therefore, I am converting the expression into integer and then I will write the function gcd. This is a build function. Build function मतलब क्या है? वो ऑलरेडी साइलैब के जो बीन है या फिर जो लाइब्रेरी है साइलैब की उस लाइब्रेरी में ये फंक्शन प्रेजेंट है gcd. तो gcd फंक्शन से हम लोग इसका gcd कंप्यूट कर सकते हैं. सो 3 लाइन का कोड है बट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. Okay, so let me copy paste this code. The only thing here is important, that is int32 converts the expression into integer format. int32 is convert this expression into integer format. So let me go to the next new Scilab code. I will first write CLC and then I will paste it and then I will save and execute. Documents, Scilab programs, P2D, save, and then I will execute. So GCD of 234 and 3882 is 6. Okay. अभी इससे मैं आपको एक GCD का कंसेप्ट सिखाता हूँ, वो आपको बहुत यूज होगा. हम लोग थ्योरी में भी ये कंसेप्ट देखेंगे. अगर आपको GCD निकालना है बड़े इंटीजर्स का, ओके, द बड़े इंटीजर्स का GCD डिवीजन से निकालते हैं हम लोग. 234 डिवाइडेड बाय 3882. कैन यू परफॉर्म द ऑपरेशन? डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्या होगा? इट इज 1. 234. If I subtract, what you will get? 1, 5, 4, 2. Approximately, if I take 200 into 8, I will get 200 into 8 कितना होता है? 1600. So I will take 200 into 7, 234 into 7. So let me take the calculator also. Equal to 234 into 7, 1638. So 1638 is not useful, so 234 into 6 करते, 1404. Okay, escape.
So it is 1404, 200 into 6, 200 into 6, 1404, subtract it 1, देन यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा सॉरी यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 12 माइनस 4 इज 8. सो 138 डिवाइडेड बाय 234. आपको जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता तब तक आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो कैलकुलेट दिस. 234 को डिवाइड करो 1 से, तो इट इज 138. कितना बचा? 96. 96 is less than 138. Again perform the division. 138, 96 1 जा 96, so it is 2. और यहाँ पे कितना बचा? 13 minus 1 42. so 42 into 96 कितना होगा? 42 into 2 84. कितना बचा? 84 का अब डिवीजन करो. 6 minus 4 is 2 1 12. 12 into 42 कितना बचा? 12 3 is 36. If I subtract, what will happen? 12 minus 6, that is 6 into 12. 6 2 is 12. Okay. Remainder आ गया 0. So what is the last non-zero remainder? The last non-zero remainder is 6, which is your GCD. अंडरस्टूड द प्रोसेस. हम लोग कंप्लीटली डिवीजन कर रहे हैं, मतलब 138 आया रिमाइंडर, उसके साथ इसको जिससे हमने डिवाइड किया वो ले रहे हैं, इसके साथ रिमाइंडर आया 96, इसके साथ जो भी डिवाइड किया वो ले रहे हैं 138, इसके साथ रिमाइंडर आया 42, 42 के साथ 96 ले रहे हैं. तब तक प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं आता. लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ जीसीडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूक्लिडियन एल्गोरिथम. This process is called as Euclidean algorithm. So कोई भी computer program will run this Euclidean algorithm to find the GCD. It will not run the program to find first the common divisor. Common divisor के बाद फिर हम लोग पहले नंबर का कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, फिर दूसरे नंबर का कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, फिर दोनों में से कॉमन कौन से एलिमेंट है वो चेक करेंगे. बहुत लेंदी प्रोसेस है. When I write the code for this, I will have the shorter code for this than the original code. ठीक है? Therefore, the GCD can be computed using Euclidean's algorithm. Okay. So this is about the practical number 2, which I wanted to tell you. Let us write the output. कहाँ गया अपना प्रैक्टिकल का ये? ठीक है, कंट्रोल भी कर देते हैं, कंट्रोल भी कर देते. हो गए ये फाइल कंप्लीट. सो प्रैक्टिकल 1 2 का फाइल कंप्लीट मैं अपलोड कर दूंगा बाद में आपके इसमें टीम्स में अपलोड करूंगा मैं. Akamal joining at this point. I will not give you attendance if you join half hour late. दिखता है ज्वाइनिंग इन्फो में कि कब आपने ज्वाइन किया. अरे N4 में ऐसे कैसे हो गया? ओके, वो सेव नहीं हुआ शायद. ठीक है, पीडीएफ तो है. प्रोडक्ट रूल. Okay, this is the practical based on unit 5. We have the product rule. Product rule says that if there is, suppose you have here, that is at your home. ठीक है, आपको कॉलेज जाना है, कुर्ला में कॉलेज, और आपका घर है ठाणे में.
ठीक है. So from home to Thane station, there is, you can have the cycle, you can come by walk, or you can have the auto. These three options are available coming from your home to the Thane station, and from the Thane station either you can go by bus or you can go by train. Now tell me how many different ways you can travel from home to the Kurla, that is college, using the Thane station. You have to stop in the Thane station. How many ways are there? One way is like this, you can go home to the Thane station cycle, साइकिल को पार्क करेंगे, बस से जाएंगे. अदर वे साइकिल से जाएंगे थाने स्टेशन तक, फिर ट्रेन से जाएंगे. सेकेंड वे वॉक करेंगे थाने स्टेशन तक, फिर बस से जाएंगे. फोर्थ वे वॉक करेंगे थाने स्टेशन तक, ट्रेन से जाएंगे. सो देयर आर टोटल 6 वेज. तो हमने कैसे पता किया? हियर देयर आर 3 वेज, 1 2 3, साइकिल, वॉक और ऑटो. हियर देयर आर 2 वेज. So if I multiply them together, then I will get the total number of ways. So this principle is known as the product rule. So if you have the three things, that is from here to here you have m number of ways, here to here you have n number of ways. It can be like this processes, and they are independent. You have to do m as well as you have to do this. सो बोथ अगर आपको करना है तो दोनों करना कब पॉसिबल होगा? यू हैव टू डू m इंटू एन प्रिंसिपल. अभी हम लोग क्या करें, देखो, द लाइसेंस प्लेट है. द लाइसेंस प्लेट विल हैव 5 डिजिट्स. लाइसेंस प्लेट कंटेन्स 2 लेटर्स, दैट इज 2 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स, दैट इज 1 2 3. फर्स्ट डिजिट, ये वाला जो नंबर है, इट कैन नॉट बी 0, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Write the Scilab code to calculate total number of license plate that can be printed considering above rules. Use the product rule principle. So first में कितने नंबर फिट होंगे? 26 फिट होंगे. सेकंड में कितने नंबर फिट होंगे? 26 नंबर फिट होंगे, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है. थर्ड में 0 यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 9 नंबर्स प्रिंट होंगे. फोर्थ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 10 नंबर्स जाएंगे. यहाँ पे भी 10 ऑप्शंस है. तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? 26 इंटू 26 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10. दैट विल बी योर आंसर. सो लेट अस फाइंड दिस कोड. ओके, लेट अस ट्राई टू evaluate this code. Control C. Let me delete all this. ठीक है. Total number of license plate that can be printed is 608400. Write it down because I don't have word file. Output लिखो 3a का. I don't have word file to give you. Have you done?
Okay, so next move on to the next one. Again, the product rule, a president, a secretary and treasurer has to be elected from the 26 member and no person is elected to more than one position. यहाँ पे क्या था, अगर मेरा फर्स्ट लेटर मैंने चूज किया A, then I can also choose the second letter A. There is no restriction like this. But अगर मेरे पास आप जैसे आज कितने प्रेजेंट है देखते हैं, ठीक है, अगर मैंने प्रेसिडेंट के पोजीशन पे दीपक यादव को सिलेक्ट किया तो मैं दूसरे सेक्रेटरी के पोजीशन पे आई हैव टू सिलेक्ट अ डिफरेंट पर्सन. आई कैन नॉट मेक दीपक यादव इज सेक्रेटरी एज वेल एज प्रेसिडेंट एज वेल एज जनरल सेक्रेटरी. सब पोजीशन में एक ही इंसान को नहीं दूंगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड यहाँ पे, आई हैव टू सिलेक्ट द डिफरेंट पर्सन एट दिस पॉइंट. सो हम क्या करेंगे अभी, इसके लिए हम लोग पहले पर्सन को एन वेज में सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड पर्सन को. सिंस एक पर्सन चला गया, देन वी हैव टू सिलेक्ट द डिफरेंट पर्सन. दैट्स वाई सेकेंड पर्सन सिलेक्ट करने के लिए मुझे n-1 वेज रहेंगे, दैट इज 25 वेज, एंड थर्ड पर्सन के लिए 24 वेज, एंड देन फाइनली आई विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस. सो लेट मी पुट दिस कोड. ये पूरा थ्योरी में पढ़ाया जाएगा यूनिट 5 में, सो डोंट वरी अबाउट इट. डायरेक्टली आई हैव प्रिंट, ये भी आप कर सकते हो. It will complete automatically into the code. So let me take it into the Scilab code only. Scilab console में क्या है ना, तो कैसे वो सेव रहता है, that's is only thing which we have to do in the Scilab. So you can see, you can copy this output. You can copy this output. I will give you 2 minutes and then I will take 3C and then we will stop. Hello. हाँ बोला मॅडम. हो आहे माहिती, पण आज मला बहुतेक नाही जमणार, पण उद्याची मीटिंग अटेंड करेन मी क्लस्टरची. हो हो, पण आज सध्या ते कॉलेजमध्ये खूप काम सुरू आहे त्यामुळे फुरसतच नाही मला. खरं तर मला कालची पण अटेंड करायची होती पण काय भेटलंच नाही. हा उद्या सुट्टी आहे त्यामुळे मला भेटेल यायला. ओके. You can take screenshot also if you don't want to write and write later. Next thing, so इसको आउटपुट आपको लिखने हैं. Write a program in Scilab to find the number of different 5-letter words that can be made A, B, C, D, E, F without repetition and repetition is allowed. तो without repetition मतलब क्या करना है हमको, value of 5p5 define करना है. Here we want to find what is the value of 6p5 and यहाँ पे अपने को repetition allowed है. repetition allowed है मतलब 5 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है. फर्स्ट में मैं 6 प्लेस कर सकता हूँ, सेकंड में 6 कर सकता हूँ, थर्ड में 6 लेटर दे सकता हूँ, फोर्थ में 6 लेटर दे सकता हूँ, फिफ्थ में 6 लेटर देता हूँ. तो टोटल मेरे पास कितने वेज होंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 6⁵5. ओके, इन द फर्स्ट आई हैव 6p5 ways. I have to find the value of permutation. What is the permutation? आपने पढ़ा होगा. What is the value of 6p5? It is 6 factorial upon 6 minus 1 factorial. NPR is equal to n factorial upon n minus 1 factorial. So it is 6 factorial upon 5 factorial. 6 factorial upon 5 factorial, value must be equal to 6. Okay, so let us see whether this is the correct answer or not. I will just copy paste this code. What I have done over here,
I have defined one function that is for NPR. NPR के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, PR. PR stands for the permutation function. फैक्टोरियल फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो साइलैब में प्रेजेंट है वो यूज किया, वेयर एज प्रैक्टिकल 2A में, P2A में हमने क्या किया, वी हैव यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड मतलब क्या होता है, हमने खुद डिफाइन किया उसको. अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो प्रोग्राम ने डिफाइन किया हुआ है और सिस्टम में जो फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो यूज करें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और इसका वैल्यू हम लोग k में डाल रहे हैं. k का वैल्यू वो परम्यूटेशन को रिटर्न करेगा व्हेन आई यूज एंड फंक्शन. तो यहाँ पे 6 डिफरेंट सिंबल है, तो n इज इक्वल टू 6 लिया. देन वी वांट टू कैलकुलेट np5 दैट इज परम्यूटेशन 6p5 और उसका वैल्यू प्रिंट किया. And with repetition we want to calculate the value of n raised to 5, उसके लिए m1 प्रिंट किया. So this is how we have done the program. So ये लॉजिक हम लोग ये कर देंगे, कंट्रोल C, राइट टैब, B, न्यू, कंट्रोल V, कंट्रोल S, and I will write P3C, save, and I will execute. So after executing, it is this output. So यहाँ पे CLC नहीं लिखा तो देखो कैसे प्रॉब्लम होता है. CLC नहीं लिखा तो पहले वाला आउटपुट भी स्क्रीन पे रहता है. So I will take CLC 7 execute and here is my output. The number of 5-letter words without repetition is 6 factorial upon 6 minus 5 factorial, that is 720. 6 फैक्टोरियल वैल्यू आया 720 हम लोग कर सकते हैं वर्ड्स. और नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स विथ रिपीटेशन हम लोगों को 6⁵ का वैल्यू मिला, दैट इज 7776. इफ यू मल्टीप्लाई 6 into 5 times you should get 7776. ओके, सो कंप्यूटेशन फास्ट बना देता है अगर आपने ये किया तो. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग्स, यू शुड program it properly. Okay, so this much we will do for today's session. Take the screenshot of the output. I will send this file, that is practical 3-4 का मैं आपको एक्सेल फाइल नहीं PDF फाइल ही सेंड करूंगा. जितने आउटपुट हमने परफॉर्म किए अब तक, जितने प्रैक्टिकल हमने किए, that should be in your journal. Your journal should be सबमिटेड टू मी इन द स्कैन PDF फॉर्मेट. आपको कैम स्कैनर यूज कर लो या कोई भी आपके पास स्कैनर है आप डाउनलोड करो कोई भी वर्जन का. इट शुड बी एबल टू कन्वर्ट इमेजेस इनटू द PDF. अगर आपको नहीं करना है कैम स्कैनर से, डोंट वरी, आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ. वर्ड डॉक्यूमेंट क्या करो, वर्ड डॉक्यूमेंट में सब इमेजेस डालो और फिर सेव एज PDF का ऑप्शन रहता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो यूज करके भी आप PDF बना सकते हो. वो PDF कॉपी आई विल प्रोवाइड यू द गूगल फॉर्म, उसमें आपको अटैच करना है. ओके, एंड देन यू विल हैव द प्रैक्टिकल मार्क्स बेस्ड ऑन योर जर्नल एंड वाइवा. बड़ी वाली नहीं है. So we will